everyone. Here I, CK Gaud, host for our today's podcast. Today we are having passionate personality with us, none other than passionate Preeti ma'am. We welcome you, ma'am, for our today's podcast. Thank you so much. I would like to dedicate one of line for you. Beauty begins once you decide to be yourself. So let's start our today's podcast with introduction from your end. Yes. Hi, all. I think ma'am has already given me an adjective, passionate, and this is the one adjective that my students always relate with my name. Right. Academically, I can say my name is Dr. Preeti Sonar, as I have completed one of my PhD, and currently I am pursuing my second PhD. And along with that, I have 4 master degrees, and along with that, I have also qualified NET in 2 subjects. And I'm also a graphologist and a writer by passion. Okay. Right. So let's start first with our question. How you got your kick or trigger towards your dream? Because अगर हम आज की ज़माने की बात करें मैम, तो बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है या कौन सा गोल उन्हें अचीव करना है. सो फॉर दैट इन लाइक यू कैन रिलेट योर लाइफ एक्सपीरियंस कैसे आपको अपना ट्रिक मिला या फिर ट्रिगर मिला कि आई वांट टू परस्यू दिस काइंड ऑफ अ डिग्री और ये मेरा ड्रीम है सो आई वांट टू गो फॉर इट. Right. So in my case, it was I am a passionate teacher. Teaching is something I cannot live without. And I got this accidentally actually through one of the interview in which जिसमें मेरा भाई एक्चुअली इंटरव्यू देने वाला था, तो वहां फोर्सफुली मैं भी चली गई थी एंड आई गॉट सिलेक्टेड एज अ प्री प्राइमरी टीचर व्हेन आई वाज हार्डली 19 ईयर ओल्ड. एंड जब वहां पर मैंने बच्चों को पढ़ाया छोटे छोटे, तब मुझे रियलाइज हुआ दैट दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू. और and thus further I continued my education. I completed B.Ed, M.Ed, and then I continued my journey in higher education. So on one side I completed my education, and on the other side I have worked in different institutions एज अ टीचर. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ड्रीम अचीव करनी है, या अभी आपने जैसे कहा कि क्लैरिटी नहीं होती है थॉट्स की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आप क्या कर रहे हो ये भी सोचना जरूरी है, बट अगले 5 सालों में आपको क्या चीज हासिल करनी है, अगर ये क्लियर हो, उसके बाद अगले 10 सालों में आपको क्या अचीव करना है, और उन लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे माइलस्टोन्स क्या अचीव करने हैं, वो क्लैरिटी अपने आप आ जाती है if your long term goals are clear. So I think to have clarity about long term goals is the key. Then you follow the small milestones to achieve that long term goal. Yes, very well said. Now, one of a lesson would you like to share when you're like going through that your growing phase? Like the challenges you are saying? Like you were in the growing phase, one kind of experience you would like to share. Okay. You have learned the lesson from it. Okay. So there are so many lessons that you learn when you are growing. But the best thing that I would like to tell to to our viewers is every time you may not be successful. Every time you may not be appreciated for your efforts. But then you have to continue your journey. I think that is very important. So if you have a dream, if you have a goal, perseverance and patience are very important. So that is what is important. And 2 lines. Yes. I would like to, as I have told, I am also a passionate poet. So there are 2-3 lines that I would like to relate at this moment. तीर जब कमान से निकलता है तो उसे पीछे आना जरूरी है. तीर जब कमान से निकलता है उसे पीछे आना जरूरी है. एक वीर बनने के लिए किसने कहा हर बार जीतना, कभी कभी हारना भी जरूरी है, कभी कभी हारना भी जरूरी है. So it's okay to fail in life. It's absolutely fine, but it is important to bounce back. तो ये एक चीज है जो मैंने एक्सपीरियंस के साथ सीखी है. That's true. So the never give up attitude. Yes. Okay. Now next question we'll take it from a professional background. As this
world is going towards, we can say, about the upgradation of a skill and teaching along with the 21st century skill, and we require the teacher as per that only the society demands. So what do you relate, like how we can relate that 21st century skill with teachers, like what kind of a skill teacher should have to meet with the 21st century student? Right. So, first, before answering this question, I always feel as a teacher, there are three domains which are absolutely essential for a Mm. teacher. One is knowledge, Mm. whether you are in 21st century or you move to the other century. Mm. One is knowledge, other is attitude, and then comes the skill. Right. So all these three are important. And when you talk about 21st century skills, particularly, I think communication skill, because communication skill doesn't include only about effective communication in English language, but it is also about connecting with the students. And nowadays, it is not just you or your actual presence in the class through which you connect, but it is also the technology through which you connect with the students. Right. So I think techno savvy teacher or skill is also very important. Yes. So I preferably will emphasize on these. So knowledge, and then attitude and skill. And when I say skill, communication skill, and along with communication skill, techno savvy skill. जनरेशन में वो 21st सेंचुरी स्किल की जो डिमांड है सोसाइटी से वो फुलफिल हो रही है? कुछ हद तक जरूर हो रही है, एंड देर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, बिकॉज द जनरेशन विच इज कमिंग नाउ आर मोर टेक्नो savvy. They are more good with the communication skills also, because they are the medium of instruction in which they have learned in school is English. So they speak good English. But I think one thing which further can be improved is discipline and dedication. These are the two areas I feel where we still have a scope for this generation to work upon. Great. Now this will be a question coming from my personal end कि जब हम बात करते हैं करियर ऑप्शन की या फिर लाइफ गोल की, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चूज और ऑप्ट आईआईटी और नीट, लाइक गोइंग फॉर द डॉक्टरेट. So in that way, why like we get few people who opt teaching as their career or profession? Why it is a still, like in today's date also, it is a underrated job? Unfortunately, when people say it is an underrated job, it is a very sad fact if they call it an underrated job. I don't call it an underrated job, but I think कहते हैं ज्यादातर लोग जो सोचते हैं वो बिलीफ बन जाता है. ट्रू. तो शायद ज्यादातर लोगों ने ये सोचा इसीलिए बिलीव बना, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट इसके पीछे ये भी एक सोच है कि कितने टीचर्स चाहते हैं कि उनका बच्चा टीचर बने, कितने डॉक्टर्स चाहते हैं कि उनका बच्चा टीचर बने. तो जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक लोग टीचिंग को सब ये बोलते हैं ये मेरी फेवरेट टीचर है, मैं इनके जैसी बनना चाहती हूँ, बट कोई ये नहीं बोलता कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ. सो आई थिंक जब तक क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाला बच्चा ये नहीं बोलता कि मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहता, जब हम स्टूडेंट्स को ये नहीं पढ़ाते प्रोफेशन के बारे में, कम ऑन व्हाट आर द प्रोफेशन, सो दे डोंट जस्ट से डॉक्टर और इंजीनियर, दे आल्सो से टीचर. सो जब तक ये ड्रीम प्रोफेशन नहीं बनेगा सबका, तब तक चीजों में बदलाव आना मुश्किल है. Yes. In my opinion, I feel that teaching is a one profession which give the contribution towards the nation and society. Absolutely. So, would you like to give some of thoughts on the same question? एब्सोल्युटली. मैं तो एक डिफेंस ऑफिसर की बेटी हूँ. मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे एंड ही रिटायर्ड एज मास्टर ऑफ वारंट ऑफिसर. तो और मेरे जो दादाजी थे वो भी आर्मी में थे, तो मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करके देश की सेवा करूं. वहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैंने सोचा और कौन सा वे है जिसके थ्रू आई कैन सर्व माय नेशन. एंड आई थिंक देयर कैन नॉट बी एनी अदर प्रोफेशन अदर देन टीचिंग, क्योंकि यहाँ पर हम हर प्रोफेशन के टीचिंग इज वन प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशंस. Right.
what student approach regarding teachers respect and values, because when we think of traditional way, so it was like guru and shishya, and nowadays it is getting little degraded, or we can say that diluted. So what you would like to say for this? Right. Well, I have two children. Hmm. One belongs to Gen Z and the other belongs to Zen Alpha. हाँ. So my son is in right now Hmm. in 10th and my daughter currently is in 6th. So definitions of respect has changed. Hmm. पहले ऐसा था कि गुरु शिष्य जब हम बोलते हैं तो जब उस जमाने में बच्चा सब छोड़कर गुरु के चरण में आकर अपने आप को समर्पित कर देता था। उसके पास गुरु ही था जो उसे बताता सही है या गलत क्या है। अब बिकॉज अनफॉर्चुनेटली बच्चों के लाइफ में गुरु तो है ही बट साथ में पेरेंट्स भी हैं जिनका भी इक्वल इन्वॉल्वमेंट है अपब्रिंगिंग में, Yes. सोशलाइजेशन में, दोस्त भी है। सो देर इज नॉट जस्ट वन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, it is teachers also, it is neighborhood also, it is friends also, it is mass media also। और हर चीज का उस बच्चे के ऊपर इन्फ्लुएंस है और ज्यादातर इन्फ्लुएंस अनफॉर्चुनेटली मास मीडिया का होने की वजह से जो भी वो सुनता है उससे वो इन्फ्लुएंस होता है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक टीचर नॉलेजेबल है, अगर एक टीचर फ्रैंक नहीं बल्कि फ्रेंडली है स्टूडेंट्स के साथ, तो जेन जी के साथ भी डील करना या मतलब बहुत इजी है। बट अभी रिस्पेक्ट की डेफिनेशन में मतलब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। अभी जनरेशन जी ऐसी नहीं है कि हम एक्सपेक्ट करें वो हमें गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, हम भी सामने से उन्हें बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग। Yes. So I think that is how the definition of respect has changed। They are, if they are all, they also want respect। That is how what I have observed in my child, that I, you know, it is not he कि जो मुझे respect दे, I should also give him respect। राइट. सो आई लाइक द स्टेटमेंट, जैसे आपने बोला कि जो टीचर का नेचर है वो फ्रैंकली कम फ्रेंडली ज्यादा होना Yes, चाहिए टू मीट द नीड्स ऑफ द टुडेज जनरेशन. it is absolutely। नाउ इफ यू गेट अपॉर्चुनिटी to change one thing in our education system, what would be that and why? Well, that's a very difficult question, I must say। uh, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी और मैं हमेशा बोलती हूँ कि वी ऑलवेज एम्फिसाइज ऑन कमिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये जो कंपटीशन है। तो मैं, मेरा ये कहना है कि जैसे ये हमारा शरीर है तो हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स है, क्या वो ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं? नेवर. दे डोंट कॉम्पीट विद ईच अदर। कि हार्ट नहीं बोलता कि मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, ब्रेन नहीं कहता कि मैं, बिकॉज एवरी ऑर्गन इज डूइंग यू नो देयर पार्ट एंड दे आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। तो मुझे लगता है कि आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सी शुड नॉट स्टैंड फॉर कंपटीशन, रेदर इट शुड स्टैंड फॉर कोऑपरेशन। तो हमें कैसे हम कोऑपरेटिव वे में क्लासरूम्स में टीचिंग कर सकते हैं, कैसे हम पीस बढ़ा सकते हैं, हार्मोनी बढ़ा सकते हैं, ताकि कंपटीशन कम हो जाए। क्योंकि एनी हाउ वी आर मूविंग फ्रॉम जॉइंट फैमिलीज टू न्यूक्लियर फैमिलीज, तो लव, अफेक्शन, ये जो बेसिक वैल्यूज है दैट शुड बी टॉट। नॉलेज तो अपने आप मिल ही रही है बिकॉज you know it is at the tip of their fingertip। Now I'm going little personally. As you are educator, you are also a proud mother of two kids. So how you manage that stress wala feeling among your students, like you kids, कि like don't run behind the ranks, just run behind knowledge. तो वैसा आप कैसे inculcate करते हैं as a parent? This message will be to all parents. So it is very simple for me because my son is not very much fond of clothes। when you know you specifically talk about brands, my daughter is little bit cautious about it। but एक चीज जो मैंने हमेशा उन्हें बताई है वो ये है कि आपके पास एसेट्स क्या है? आपके एसेट्स आपकी फैमिली है। अगर आपके पास फैमिली है तो सबसे बड़ा एसेट आपके पास है। तो आई थिंक ये जो वैल्यूज, मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हमें उन्हें बतानी चाहिए, इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम कि आपके पास गाड़ी है या फ्लैट है या कोई और चीज है। दैट इज द योर एसेट, योर नॉलेज एंड योर फैमिली। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट एसेट एंड दैट इज अ लाइफ लॉन्ग एसेट। जैसे आपने कोविड में बहुत सारे सेशन कंडक्ट किए थे अबाउट रेजिलियंस,
how person can build, develop that self belief, and that really helps a lot many of the students. So in that way, how one can bring that self belief a part in the life, because somewhere situation comes, they lose their hope, they lose their self belief कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. तो उस टाइम पे what kind of qualities or what kind of thing they have to run behind. जी, वेरी नाइस क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सबको बताना चाहूंगी कि कोविड वाज वन टाइम जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके आई कुड रीच टू मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया, जिनमें और उस वक्त रेजिलियंस की सबसे ज्यादा जरूरत थी. एंड थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई कुड रीच आउट टू द स्टूडेंट्स. और जैसे आपने सेल्फ बिलीफ की बात कही, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम व्हाई डू वी हैव सो मच ऑफ कंसर्न अबाउट व्हाट पीपल विल से. सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो आई थिंक सेल्फ डाउट तभी आता है जब हम बहुत ज्यादा सोचना शुरू करते हैं, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा. क्योंकि अमरूद जब हम खरीदते हैं, तो ऐसा काफी फेमस एक है जिसमें लोगों ने कहा है कि जब अमरूद खरीदते हैं तो पूछते हैं मीठे है क्या, और खरीदने के बाद में उस पर नमक लगाकर खाते हैं. यस, रियलिटी. तो दैट्स द वो ऐसा होता ही है. आई थिंक सेल्फ बिलीव आता है जब आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं और अपने काम पर विश्वास रखते हैं. और जैसे मैंने कहा, पेशेंस एंड परसिवरेंस, हार्ड वर्क, जब आप इसके साथ काम करते हैं तो, और सेल्फ एप्रिसिएशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है. That's really very important in today's generation to think about self appreciation. Because जब बात आती है, कुछ समय ऐसा होता है कि जब बच्चे भी, स्टूडेंट भी, वो सोचते हैं कि एप्रिसिएशन मिलेगा तो मैं पढ़ाई करूंगा, या स्टाफ की बात कर ले तो एप्रिसिएशन मिलेगा तो आई विल डू सम काइंड ऑफ अ वर्क. Now we'll take end part for our today's session. Myth or fact? Government teaching jobs are more secure than private jobs. Myth or fact? Well, that's the fact, because once you get a government job, your service is sure. तो आप एक बार ज्वाइन हो गए तो ऑब्वियसली आप तो वहीं रहेंगे until and unless there is a major controversy. So that's the fact. Teachers are not getting good pay scale and perks in India when we compare to other countries and facilities. Okay, तो मुझे ऐसा लगता है कि it's a myth. Why? Because there are very good schools in India. अगर आप में knowledge है, आप में skill sets है, तो you know whatever you look for, whatever you ask for, you get it fulfilled. Wealth is always equal to success. Well, अगर ऐसा कहेंगे तो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो सबसे ज्यादा सुखी है, बट ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. So what is wealth for you? I think the definition of wealth is different for everybody. Yes. So you can't, every time monetize everything, because you may have a lot of money, but you may not have relations in life. So you need to have a balance of everything in life. You can't say you have very good relations, but you don't have money, because even for managing relations, you need to have money, isn't it? So there has to be a balance of everything in life. Teacher's job is only stick to 9 to 5, and teachers' job schedule is so busy and completely packed, they do not have their free time to do anything in their life. Myth or fact? It is a fact that teacher's job is not 9 to 5. Teacher is working 24 into 7, but I always say you have to be passionate about it. Until unless you are not passionate about it, you will always feel it as a burden. Right. So enjoy it. Passion aligned with job brings productivity in life. Absolutely true. Absolutely true. And that's the reason you should always do something that gives you pleasure, so you don't feel fatigue in that. Right. I have a real example in front of me for the same question. Now, what has been changed in today's era as compared to traditional in teaching profession? Now, this is the last question for the same. Like when we compare traditional teaching method and this teaching method, what has been changed? There's a lot of involvement, because now the attention span has reduced. Children energy has increased. The way they are brought up at home
has changed. So there's a lot of involvement which is expected. So Right. you need to have a lot of audio visual aids in the Mhm. classroom. You need to have a lot of interaction with them. You need to give them a lot of freedom to talk in the class. You can't be the dictator in the Yeah. class. You need to have children, in fact, who are uh, teaching in the class. You can give them small pointers through which they can prepare at home, coming to school, and Mhm. they teaching. तो उन्हीं को क्लास का मॉनिटर बनना पसंद है, Mm. बिकॉज ऑल ऑफ देम एंजॉय डूइंग दिस. सो इंस्टेड ऑफ देम बिकमिंग पैसिव, आई थिंक आज ये चेंज हो गया है Mm. कि वो बहुत एक्टिव है Mm. और उनको बहुत सारे क्रिएटिव एक्टिविटीज चाहिए ताकि वो क्लास का होल्ड ले ले, Mm. और हम सिर्फ फैसिलिटेटर करके उनके साथ रहे.